Welcome all of you. Today we have come here for a session which is related to USP. This is about USP today. So so there are two major things. Actually, there are various things when you build a product, or there are various things in terms of marketing, in terms of building the product, in terms of engineering, and also managing the team and defect fixing and everything. So there are a lot of things. Okay, but today our focus is USP and something which is very related to it, which we will not go into, but I will just explain maybe lightly. So something is called as value proposition. Okay, what value are you providing? As simple as that. Let's say Zomato is providing a value by delivering food to your home. Similarly, Uber is providing value in terms of app to give you seamless access to book a ride anywhere from anywhere. They have a large footprint. Okay, so that's value proposition. When you define a business or when you define a product line, you define value proposition along with various other things. So that is value proposition. Why I explain value proposition also is that it is closely related to this one, USP. So USP is nothing but unique selling proposition. It is also called as unique selling point. ठीक है, यूनिक क्या करते हैं आप, is what it means. What does your brand do unique? What is it unique about? So there are flights, and then there are premium flights, and then there are cheap flights, and then there are super cheap flights. Let's say discounted prices. तो ये क्या कर रहे हैं? They are all selling rides on the plane, but they have their own niche carved out in the market. They know their customer base very well, and they have something unique about what they are doing. एक as it is copy नहीं कर रहे हैं, right? Business model सेम ही है, but they are not copying each other like copycats. A से Z तक copied नहीं है. They have to have a unique feature, because why will customer want to go to a competitor? ठीक है? Actually, there are lots of other reasons also. मतलब customer would not want to switch just a product just by adding a unique feature to your product. इतना enough नहीं है उनको entice करने के लिए. It's actually your product should be at least, let's say, 10 times better than the competitor maybe. But let's see what USP is. So USP is what makes your product better than your competitors. These are all you can take maybe the definitions. अलग अलग तरीके से हम कैसे उसको समझ सकते हैं. तो USP क्या है? It's the heartbeat of your business. USP क्या है? It is what is unique to you. USP क्या है? It highlights your company's unique position in the marketplace. तो आपको जब कस्टमर्स देखते हैं एज अ कंपनी या एज अ प्रोडक्ट, सो वेयर डू दे प्लेस यू? जैसे उबर है तो उबर इज अफोर्डेबल, है ना? उबर इज ubiquitous, it's available everywhere. So there are some unique values that Uber is providing. Okay, so what highlights your company's place in the marketplace alongside your competitors? What is that makes you different or unique? Then, as I said, it's, you can also call it heartbeat of the business. All these are nothing but different definitions of USP. Unique selling point, the value you offer and the problem you solve. Fourth one, maybe what is, as I said, so इसीलिए मैंने वैल्यू प्रोपोजिशन का बताया डेफिनेशन पहले. सो वैल्यू में क्या होता है? वैल्यू प्रोपोजिशन इज अ बिगर थिंग. मतलब जैसे जोमेटो बोलेगा वी, जैसे वी सॉ, राइट, it will help you to buy food from the comfort of your fingertips, right? अब उसके बीच में they add a lot of things now, but USP is what exactly the problem are you solving? So let's say value proposition is a bigger box, and in that there is a smaller box which is USP. USP is a subset of value proposition. ठीक है, वैल्यू कैनवस बड़ा हो सकता है जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर्स को, उसमें बहुत सारी चीजें आ सकती हैं.
क्योंकि एक फूड ऑर्डर करने के लिए जोमेटो को 6-7 सप्लाई चेन्स मेंटेन करने पड़ते हैं. फॉर एग्जांपल द सप्लाई चेन इज सो कॉम्प्लिकेटेड विद जोमेटो. मे बी इफ यू सी देयर आर riders coming to your house, there is a feedback problem, feedback module, there is a basically tip, you can tip the people, then there is a calling module, then there is a discount and offers, right? Then there is a restaurant ratings comparisons, then there is a location module, then there is a address picker module, right? And you name it. तो अभी हम देखते जाएंगे तो we will see कि Zomato is doing at least 20 hot market load microservices. They must be managing at least 20 odd microservices. If you see core services, हमारे पास एक है अभी. Think of basically 20 of those, right? Managed in a different managing a load of a billion customers. So it's तो ऊपर से बहुत सिंपल दिखता है जब हम यूज करते हैं ना, बट देर इज अ लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इन द इंफ्रास्ट्रक्चर. सो दैट इज देयर चैलेंज, दैट इज देयर होल एंड सोल. बट इसमें वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है? जो कस्टमर्स को वैल्यू मिल रहे हैं उस ऐप की वजह से या उस बिजनेस की वजह से, वो बिजनेस के मार्केट में होने की वजह से, व्हाट ऑल वैल्यूज कस्टमर्स आर गेनिंग. पूरा जो वैल्यू कैनवस है उसका, जैसे जोमेटो आपको इंश्योर भी करता है आपके फूड को, जैसे इसमें होता है ना, मेक माई ट्रिप वगैरह में भी होता है. वी कैन टेक अनदर ब्यूटीफुल एग्जांपल लाइक मेक माई ट्रिप. तो जोमेटो पे वी सॉ सम फीचर्स. मेक माई ट्रिप का देखते हैं. मेक माई ट्रिप में देर इज अ होटल बुकिंग थिंग, देर इज अ प्लेन बुकिंग थिंग, देर इज अ बस बुकिंग थिंग, देर इज अ इंश्योरेंस, there is extra luggage, there is early check-in in your hotels, there is cancellation module, there is a refund module, there is payment module, right? And so on and so forth. So make my trip also has another 20 different services. तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया. बट यूजिंग दीज इंफ्रास्ट्रक्चर दे आर गिविंग अस लॉट्स ऑफ वैल्यूज टू देयर कस्टमर्स. तो कस्टमर को क्या वैल्यू मिल रहा है कि वो रिफंड देते हैं फटाफट. कस्टमर को क्या वैल्यू मिल रहा है कि होटल बुक कर सकते हैं झट से कभी भी उसमें, राइट? कस्टमर को क्या वैल्यू मिल रहा है कि मेक माई ट्रिप वेरीफाइड, होटल्स आर ऑलवेज गुड, राइट? या और कोई है, मतलब एमिनिटी सिलेक्शन है, उनका सर्च भी है, एडवांस सर्च. एक्चुअली वी फॉरगॉट सर्च इन ऑल ऑफ दीज. सर्च इज आल्सो यूबिक्विटस इन ऑल दिस. सर्च में क्या है? सर्च में यू कैन फिल्टर एमिनिटीज एंड ऑल दोस थिंग्स. सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स एडवांस. तो ये यूज करके वो लोग इंफ्रा कस्टमर्स को एक वैल्यू कैनवस ऑफर करते हैं. So those values could be a lot of values, but out of those values, a combination comes out, or maybe one of those values could be USP, like fast delivery. In terms of, let's say, courier industry. So someone is delivering very fast. There are hundreds of आपको किधर भेजना है पार्सल, तो हमेशा कभी भी अर्जेंसी रहेगी, कभी अर्जेंसी नहीं भी रहेगी, राइट? So in the courier business, you have all kinds of couriers. There are people who will do a premium, right? We all know that. It's a very simple example. I really hope आप बहुत सारे आप लोगों को पता होगा कि हम ज्यादा पे करेंगे तो वो जल्दी भेजेगा, आपका प्लेन से जाएगा पार्सल, बिकॉज यू आर पेइंग एक्स्ट्रा प्रीमियम. ठीक है. देन लेट्स सी द फिफ्थ पॉइंट, व्हिच इज यूएसपी फोर्सेस यू और मे बी हेल्प्स यू टू वॉक द पाथ ऑफ कंपनीज विजन एंड गिव्स इट अ रीजन ऑफ बीइंग. तो अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कंपनी के जो कोर वैल्यूज हैं, और थिंक ऑफ द कोर विजन, यूएसपी हेल्प्स यू टू वॉक दैट पाथ, बेसिकली वॉक द टॉक. कि हम क्या करते हैं, वो ये बोलेगा, जैसे कुरियर का बताया, तो वो बोलेगा फास्ट डिलीवरी करते हैं, है ना? तो उसके यूएसपी में ही आपको कैचवर्ड भी मिलेगा, उसका लोगो उसके अराउंड है, लाइक उसके लोगो उसके अराउंड है, उसकी पंच लाइन उसके अराउंड है, एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड बिकॉज द यूएसपी इज द हार्ट. अब समवन में है वो क्वेश्चन हियर कि अरे ये बना देंगे तो इट्स लाइक बेसिकली सेटिंग इन कंक्रीट और सेटिंग इन सीमेंट. नहीं, ऐसा नहीं है. इट कैन बी रीशेप्ड. जैसे आप कंपनी का पिवट करेंगे, योर यूएसपी कैन चेंज एज वेल, at least in the initial years. Definitely once, like small startups, for the first 3 to 5 years there will be a lot of churning, there will be a lot of changing, there will be a lot of value propositions will change. In fact, it is used like a process. We will see the customer discovery process. Let's see. So USP का मतलब है कि आप यूनिक क्या कर रहे हैं, बस. That's it, as simple as that.